Okay, ji, let's start our new lecture, and it is about Wordsworth's lyrical preface to lyrical ballads. Lyrical ballads is the collection of poems published as lyrical ballads in 1798 by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, and it has been traditionally seen as the birthplace of English Romanticism. We have already talked about in detail about the Romantic movement, its different aspects and shades, major poets of the Romanticism, and its poetic theory that was presented by Wordsworth, and the collaborative work of Coleridge and Wordsworth. Romanticism is an artistic movement, especially in poetry. It is signified by Wordsworth and Coleridge, and their collaborative work, lyrical ballads, serve as a start of the Romantic movement. It serves as a guide that shows how a poem should be. It also talks about the language of poetry, what are the major concerns of Romantic poetry, the object of poetry, the treatment of nature in Romanticism. Then it is based on a call back to nature, this Romanticism, and it was against the urban themes and subjects which were, very popular in classical age, as well as in neoclassical age. It is against different prescribed rules of rhyme and form of poetry. So it's basically a transition line between neoclassical era and Romantic era, a transition from scientific logic to nature. We can analyze lyrical ballads under three headlines. But before talking about these heads, let me tell you what were the major characteristics of the neoclassicism. It is about order and form. There were set rules and regulations how a poem, how poetry should be composed, what kind of patterns it should follow, what forms it should follow. It was a conscious imitation of classical literature, right? Yes, Romanticism also seeks its inspiration in the classical literature, Roman and Greek, but their treatment of the classical literature is different from that of the neoclassical or the classical treatment of that literature. It is an emphasis on reason. Reason has a primary importance. The language of a neoclassical or classical poetry is quite refined. A very sophisticated language has been employed by the poets. They have been very much meticulous about the sterilities, the impurities of language. They have been using a very refined kind of language as far as classical poetry is concerned. Yes, it discusses urban themes, urban subjects,
and presented the city life. That was the prominent theme, as well as the topics of writing for the classical poets. Quite unlike the neoclassicism, romantic have been different in their approach to poetry, its characters, its subjects, the incidents, and even events that have been discussed in romantic poetry are quite, different to that were discussed in neoclassical poetry. I have already discussed that it presents rural characters, rural incidents, rural life. The language used by the people who are living very close to nature. There is a great emphasis on nature, mysticism, supernatural, imagination, and feelings and emotions. And there is a very dominating streak of individual experiences of the romantic poets. Well, we can analyze lyrical ballads under three headlines, and first one is the qualifications of a poet. The second one is the language of a poem, and third is the topics of poem. William Wordsworth was born in 1770 in a little town in the Lake District, Cockermouth, northwest of England. And in 1787, he entered Cambridge, and while still a university student, he went on a 3-month walking tour of France, the Swiss Alps, and Italy, and was greatly impressed by the beauty of the landscape. When he finished his degree, he returned to France and became a passionate supporter of the democratic ideals of the French Revolution. So they have been, contributing to the great event in human and European history, that of the French Revolution. The people from, across the border, England and other countries, they supported the revolution. They advocated the slogans and the aims of the revolution. Liberty, equality, fraternity, freedom. These have been the slogans of the revolution. So the people were, though they were just the spectators, they were, commenting on the revolution, but they had, the spirit of the revolution in feeling in themselves, as if they have been the part of the revolution themselves. In 1794, he went on to live with his sister Dorothy Williams in a small village in Dorset. In the same year, he met Samuel Taylor Coleridge, a poet with similar radical political and literary views. This friendship had a lasting impact on both poets, as well as it maneuvered the start of a new movement in art, and that is Romanticism. It was, a collaborative work, and there have been poets who were sharing the similar kind of ideas about art, about the social realities, about their experiences, and their approaches to different subjects. So, though all the romantic poets have their unique experience to express through their poetries, but they share certain features of their poetry, their ideas, their notions. William Wordsworth and Dorothy Williams went to live close to Coleridge, and together they discussed political issues. They read together, wrote together, and exchanged theories on poetry, and commented
on each other's work. In this period of intense creativity, they produced the Lyrical Ballads, and that is a collection of poems. And the second edition of 1800 of Lyrical Ballads contained Wordsworth's famous preface to Lyrical Ballads that is included in your course, and that was to became the manifesto of English Romanticism. The preface became the manifesto of English Romanticism. It set and it determines the aims and objectives and the interests of the English Romanticism. In 1799, William and Dorothy William moved to Grasmere, one of the loveliest villages in the Lake District, a region that Wordsworth immortalized in his poetry. I mean, a lot of inspirations coming from that area that he incorporated in his poems. The natural scenery, the situation over there, the beautiful aspect of nature have been shared in his poetry by Wordsworth, and the inspiration coming from that Lake District. His life can be divided into four major periods, and that is childhood and youth, university life, and he traveling around the world and revolutionary experiences, the Great Decade, third one, and the final is the final period. Fourth one is the final period. Three things clearly emerges from his poems. Firstly, he loved to be alone and never felt lonely in nature. And he, I mean, is well aware of the value of loneliness as far as the creativity or the production of creative poetry or imaginative poetry is concerned. He considered it a bliss for himself to be alone because it contributed a lot. It gave him the sort of time and that seclusion to concentrate on his work. Secondly, he felt the presence of some living spirit, real though unseen. He's been, quite pantheistic towards nature, and he talks about the living spirit, God of nature. Though it was not, possible to see or to that spirit, but he felt the presence of this living spirit in almost all the objects of nature. And thirdly, his impression of nature were delightfully familiar. From sensuousness to he moved on to spirituality. In the childhood, he was associated with nature through his senses, and that later emerged to his spiritual kind of love, and that transformed into love for humanity. So these sort of stages of his pantheistic attitude towards nature has been. Wordsworth was one of the giants of English poetry. Though people have been, criticizing him for his subjective sort of poetry, something new in tradition, but the fact remains intact that he was among the great poets of English literature. Plenty of inferior work was written by him, and his historical importance, no doubt about that. He presented theories of poetry and the revolution he effected. He was famous for being the poet of nature. He was also famous for being a poet of childhood, and he was talking about almost all kinds of things associated with
childhood, I mean, love, brotherhood, friendship, love for nature, natural objects, something supernatural, almost all these things. The innocence is very much there. Some other poets also, I mean, commented on the same things. As a poet, his poetry is a reflection and of his philosophical thought and his lyrical gift. The preface to the Lyrical Ballads basically deals with the laws of human nature, low and rustic life, the language of rustic people, conceptions of the poet and poetry, and revolutionary and democratic sentiment as the basic of his poetic theory. These have been the major concerns in his preface to the Lyrical Ballads. His theory of poetic diction, the language of conversation in the middle and lower classes of society, a selection of language really used by men. वर्ड्सवर्थ जो है वो जब अपनी पोएटिक थ्योरी को प्रेजेंट करता है तो उसके अंदर चंद पॉइंट्स हैं जिनको वो बड़ी डिटेल में जो है वो बयान करता है, अगरचे अपने पॉइंट्स में वो थोड़ा मुबहम भी है. There are ambiguities, and later the criticism of Coleridge on Wordsworth's theory was, I mean, sufficiently a comment on his poetic theory to clear the ambiguities. He raised certain questions, और उसके जो सवालात थे वो I mean उसकी theory के अंदर जो इबहम है तो उनको काफी हद तक जो है वो क्लियर भी करते हैं. Coleridge's criticism is very much there, lessening the range of emotion, poetry as spontaneous overflow of emotion, poetry as the expression of emotion recollected in tranquility, the service done by Wordsworth to poetry and meter and poetry. There are some lyrical aspects of the volume, the metaphysic of the imagination, the life of the sense, a challenge to the general poetry reading habits, Wordsworth's democratic sympathies, blank verse poems, and the disintegration brought about the volume. So these are a few of the different aspects about the Lyrical Ballads and the preface to Lyrical Ballads. Wordsworth has been a great innovator. He, as a poet of nature, presented a lot of new things, and he philosophized nature, rather his pantheistic view towards his pantheistic approach towards nature, rather spiritualized nature. So he found his greater inspiration in nature. His poetry offers an account of the interaction between man and nature, of the influences, emotions, and sensations which arise from this contact between man and nature. His main interest is the poet's response to a natural object, as to how he reacts to whatever he sees in nature. There are very many other poets who are commenting and expressing their attitude towards nature, but Wordsworth has something unique about his response, his reaction to nature and the natural objects. So that's what makes him, I mean, stand out among the nature poets. We may have, for example, Keats and Shelley, William Blake. Then we have this Robert Frost, the American poet. So multiple views and approaches towards nature come from different people.
they have their own creed, they have their own sort of mindset towards nature, they have their own beliefs about nature. One of the most consistent concepts in his poetry is the idea that man and nature are inseparable. And he considers nature to be performing the role of a mother, of a teacher, a benefactor, a mentor, a friend, a companion, and whatnot. According to Wordsworth, man is an active participant in the natural world. And if he goes with a receptive mind and heart, he can get a lot from nature. And nature has a constructive role to play in the development of man. Nature is something that includes both inanimate and humane nature. Each is a part of the same whole. I mean, he deals with the human nature. It's not humane, actually it's human nature and inanimate. जो बेजान चीजें हैं फितरत के अंदर, वो उनको भी जो है he regards as the part of the same whole. I mean, they are part of the nature, whether they are inanimate or they are human. Nature comforts man in sorrow. Nature is a source of pleasure and joy. And we have Keats' very famous quotation that a thing of beauty is a joy forever. So nature for Wordsworth is a source of pleasure and joy. Nature teaches man to love and to act in a moral way. So it has a very constructive and a moralistic impact on the development of human character and his personality, his morality. Wordsworth's poetry celebrates the lives of simple rural people. He sees them more sincere than people living in cities, because in cities, the Romantics believed that there was more artificiality than sincerity, originality. So that's what actually Romanticism does. It calls people back to nature, raise the slogans in favor of nature and natural setting, natural sentiments, natural language, all these things. Wordsworth concept of poetry, as far as it is concerned, Wordsworth believed that intuition, not reason, should guide the poet. So in romantic poetry, reason gets a secondary importance, and it is human emotions and feelings and intuition जो आपकी एक वजद की सी कैफियत है, जो I mean deeper एक insight है चीजों का, तो that should guide the poet, right? Poet should not go for the surface logic of the things. So that's why they regard reason to be of the secondary importance in poetry. So inspiration should come from the direct experience of the senses, right? और वो define भी करता है poetry को, तो वो फिर इसी तरह से करता है, it's an overflow of powerful feelings and emotions. ठीक है, तो that's what you directly get from the experience of the things, right? Daffodils की poem है, तो आप उसको वहाँ पे quote कर सकते हैं. I see thousands at a glance. तो I mean एक sensuousness जो है, जो हवास की एक gratification है senses की, that is part of a very major part of romantic poetry. तो वो भी जो है वो इस direct experience of the senses के ऊपर जो है वो inspiration को base करता है. Wordsworth exploited especially the sensibility of the eye and ear. ठीक है, खासतौर पे जो है वो आँख, नजर और जो है वो कान, इन दोनों सेंसेस को जो है वो ज्यादा डील करता है. कीट्स के अंदर जो ये सेंशुअसनेस है, दैट इज मोर एविडेंट, राइट? वो तकरीबन तमाम ही किस्म की जो है वो जो सेंसेस हैं
उनको जो है वो ग्रेटिफिकेशन, उनकी ग्रेटिफिकेशन की बात करता है, ठीक है। यू माइट हैव रेड टू ऑटम इन योर फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स ऑन इंट्रोडक्शन टू पोएट्री एंड ड्रामा। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है वो इसको टेस्ट भी देखे, पिक्चर्स भी थी, जो है वो आवाज़ें भी थी, और जो है वो एक किस्म के जो है वो सेंस ऑफ टच इज़ वेरी मच देयर। तो आई मीन मतलब यह है कि वो तमाम ही एक्सपीरियंसेस को जो है वहाँ पे नज़र आता है। और दिस सेंशुअसनेस इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ रोमांटिक पोइट्री। Poetry, Wordsworth wrote in the preface, originates from the spontaneous overflow of powerful feelings, which is filtered through emotion, recollected in tranquility, and memory plays a fundamental role in the creative process of poetry. Poetry results actually from the active relationship of present to past experience. As far as romantic process of poetic composition is concerned, there are 4 stages for that purpose that have been introduced. First one is the observation, second one is the recollection, third one is the filtering, and fourth one is the composition. Let me repeat these stages. Stage 1 is the observation of nature, definitely. आप वर्ड्सवर्थ की पोएम जो है डैफोडिल्स उसको जहन में रखें। ऑब्जर्वेशन। स्टेज 2 जो है दैट इज रिकलेक्शन, एंड थर्ड वन इज द फिल्टरिंग। कौन सी चीज उसमें से किस किस तरह से जो है वो फिल्टर करनी है, सारी ऑब्जर्वेशन से, रिकलेक्शन से, एंड देन कंपोजिशन। फोर्थ स्टेज इज कंपोजिशन. So this is how I mean romantic जो कंपोजिशन है, पोइट्री का प्रोसेस है, उसमें से जाता है. उसे देखते हैं, जैसे उसकी पोएम है बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, उसकी पोएम है द सॉलिटरी रीपर. तो उसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो इस तरह से, बिहोल्ड हर, आप उसको देखते हैं, सिंगल इन द फील्ड, यू यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, एक लड़की है, अकेली है, ऊपर पहाड़ों के ऊपर जो है वो खुले मैदान में, और वो अकेले जो है वो नजर आ रही है. आप उसे देखते हैं रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, वो अपनी कटाई भी कर रही है और साथ ही साथ गुनगुना भी रही है. स्टॉप हियर, रुक जाए, और जेंटली पास, या अगर किसी ने गुजरना है तो वो बगैर कोई आवाज पैदा किए हुए उसके पास से गुजर जाए. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली ही जो है वो अपनी उन बालियों को, खेत के अंदर जो गल्ला है उसको काटती है और उनके जो है वो दानों को इकट्ठा करती है, बालियों को. एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और कोई उदास सा नगमा जो है वो गाती है. और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और सुने तो पूरी की पूरी वादी जो है, पूरे का पूरा जो जगह है, इलाका है, वो उसकी उस आवाज से जो है वो गूंज रहा है. इट्स ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. So this is the observation. Recollection क्या है? Note Nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice too thrilling, so thrilling, never was heard. In springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. तो वो एक उसका जो दूसरा हिस्सा है पोएम का, वो बता रहा है कि किसी नाइटिंगेल ने शायद इतने खूबसूरत नगमे जो है यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए, कि जो किसी सायादार जो है वो जगह पर बैठे हों, तो उसने नहीं गाए होंगे उनको कंफर्ट करने के लिए, या फिर जो है वो जो अरब जो है वो सहराओं में से गुजरते थे, कोई आवाज़ इतनी जो है वो
सनसनी पैदा कर देने वाली कभी नहीं सुनी गई बाहर के मौसम में। हत्ता कि कोयल जो है, जो परिंदा है, तो उसकी आवाज़ भी जो है वो कभी इतनी जो है वो श्रीडिंग नहीं होगी, थ्रिलिंग नहीं होगी जितनी आवाज़ उस सॉलिटरी रिपर की थी, जो समंदरों की खामोशी को जो है वो तोड़ती है। दूर जज़ायर के ऊपर जो समंदर है, तो वहाँ पर जो खामोशी है, जो एक साकत सुकूत जो है वो तारी है समंदर के ऊपर, तो उन किसी आवाज़ ने उतना जो है वो उसको नहीं जो है वो तोड़ा होगा सुकूत को, जितनी जो है वो ये एक जो है वो थ्रिलिंग साउंड जो इस सॉलिटरी रिपर के की है। फिर वो इसमें से फिल्टर करता है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, शायद उसका नगमा जो है किसी पुरानी उदास कर देने वाली चीज़ों के बारे में है, माजी की। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, कुछ उन जंगों के बारे में जो बहुत अरसा पहले कभी माजी में लड़ी गई। और इज इट सम मोर हम्बल डे, या फिर किसी और फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे जो ज़्यादा लोगों के अंदर, जिसको लोग जानते हों, उसके बारे में है, या फिर किसी जो है वो बहुत ही एक हम्बल ओरिजिन से जो है वो कोई कहानी जो है जिसको गुनगुना रही है, कोई गीत है। सम नेचुरल सॉरो, कोई ऐसा जो कॉमन सा दुख हो सारी ह्यूमैनिटी का, कोई लॉस हो या कोई पेन हो जिसके बारे में वो गुनगुना रही है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो कभी रहा हो और फिर भी कभी जो है वो आएगा, दोबारा भी हो सकता है। क्या वो इन चीज़ों के बारे में जो है वो गुनगुना रही है? कोई शख्स ऐसा है जो मुझे बता सकता है व्हाट शी इज सिंगिंग एक्चुअली, क्या है मौजू, क्या है उसके गीत का। सो कंपोजिशन होती है वट एवर द थीम द मेडन सैंग, चाहे कोई भी नगमा था, कोई भी मौजू था उसके नगमे का, बट उस दोशीज़ा ने जो है वो गीत गाए एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो है वो अंजाम नहीं है, इख्तिताम नहीं है उसके गीत का। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, वो काम भी कर रही थी और काम पे गुनगुना रही थी, मैंने उसको देखा। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो अपनी दरांती के ऊपर जो है वो झुके हुए कटाई कर रही थी। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल, और इतनी मशहूर कुन आवाज़ थी, मैं सुनता गया और बेहिस हरकत जो है वो सुनता गया, जैसे मशहूर हो गया मैं उसकी आवाज़ से। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, जैसे जैसे मैं पहाड़ के ऊपर सफ़र तय करता गया, चढ़ता गया, वो मौसीकी जो थी उसकी आवाज़ की, वो मेरे दिल में घर करती गई। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और हत्ता के काफ़ी अरसे के बाद वो वहाँ पे मुझे दोबारा नगमा, मैं कभी वहाँ से गुजरा हूँ तो मुझे नहीं वो दिखाई दिया, नहीं सुनाई दिया, लेकिन वो जो उसकी याद थी दैट वाज वेरी मच देयर। तो ये पूरी पोइम है जो इन चारों जो है वो स्टेजेस को जो है वो कवर अप करती है। इसी तरह से डेफोडिल्स है, तो वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्टरिंग और कंपोजिशन जो है, ये चार स्टेजेस। आई मीन जितनी भी आप लोग उसकी वर्ड्सवर्थ की जो पोइम्स हैं, स्मॉल पोइम्स हैं जहाँ पे वो अपनी थ्योरी को प्रैक्टिस करता है, यू कैन गो फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गिव द रेफरेंस टू दो स्टेजेस। So, poetry results from the active relationship of present to past experience। तो past के experience को लेकर के जो है वो present के अंदर वो उसको remember करता है, और memory has a fundamental role in the creative process of poetry। ये stages अभी हम लोग जो है वो देख रहे थे इसके अंदर। Through the recreative power of memory, the emotion is reproduced and purified in poetic form, so that a second emotion kindred to the first one is generated, right? जिसको जो है वो अपने एक लेक्चर के अंदर जो है वो कुछ यूं बयान करता है कि जो ऑब्जेक्टिव है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट देन विच आई प्रपोज टू माई सेल्फ इन दीज पोइम्स, जो लिरिकल बैलेड्स के तौर पर जो है वो पब्लिश हुई, was to choose incidents and situations from common life and to relate or describe them throughout as far as possible in a selection of language really used by men, जिसको जो है वो ऐसी जुबान में
जिसको जो है वो आम जो हमारी बोलचाल की जुबान है, जिसको जो कॉमन पीपल हैं, they use for their communication, and at the same time to throw over them a certain coloring of imagination, और उसके अंदर जो है वो अपनी उस तखय्युल को जो है वो सबत करना था, अपनी जो एक इमेजिनेटिव, एक तसव्वुराती तखय्युलाती जो तस्वीर है उसको बयान करना था, वेयर बाय ऑर्डिनरी थिंग्स शुड बी प्रेजेंटेड टू द माइंड इन एन अनयूजुअल वे, और उस इमेजिनेशन के कलरिंग की वजह से जो है वो यूजुअल चीजें जो हैं, कॉमन चीजें जो हैं, दे बिकम unusual, they become extraordinary, they become unfamiliar। जैसे अब मैंने भी बात की सॉलिटरी रीपर की, हालांकि एक बच्ची है, लड़की है जो किसी खेत में जो है वो काम कर रही है और गुनगुना भी रही है, बट द वे द वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट्स द एक्सपीरियंस, it becomes something very strange, very novel, very unusual। इसी तरह से हम लोग डैफोडिल्स की बात कर रहा था, तो वो भी एक्सपीरियंस एक कॉमन एक्सपीरियंस हो सकता है। आप मुख्तलिफ किस्म के फूलों को जो है किसी झील के किनारे, किसी नहर के किनारे या किसी नदी के किनारे जो है वो देख सकते हैं, बट द वे दे हैव बीन प्रेजेंटेड इन द पोएम, इट्स क्वाइट आई मीन अनफेमिलियर। जैसे वो हम लोगों ने वो फूल ऐसे हैं, कहीं उनकी 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 जो कहानी सुनाता है पोएट वर्ड्सवर्थ जो है, तो वो ऐसा लगता है जैसे वो इस जमीन के नहीं है, वो कोई मावराई जो है वो कोई जो है वो फूल है, या वो कोई मावराई जो है वो लड़की है जो वहां पे सॉलिटरी रीपर है, जिसको वो अपनी पोएम्स के अंदर प्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाट बिकम्स अनयूजुअल। And further and above all, to make these incidents and situations interesting by tracing in them truly, though not ostentatiously, the primary laws of our nature। उसके अंदर जो है वो जो सिचुएशंस और इंसिडेंट्स जो पेश करने का मकसद जो है वो उनको इंटरेस्टिंग भी बनाना होता है, ठीक है। उनके अंदर जो हमारी जो फितरत है, उसके जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं, प्राइमरी लॉज हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जो है वो बात करनी होती है। ही टॉक्स अबाउट द एस्थेटिक प्लेयर, एस्थेटिक अप्रोच जो है टुवर्ड्स द थिंग्स, एक सेंस ऑफ वंडर की बात कर रहा है। सो एज टू हाउ वी लुक एट द यूजुअल एंड ऑर्डिनरी एंड कॉमन थिंग्स and pick them as something unusual, extraordinary, unfamiliar things. So chiefly, as far as regards the manner in which we associate ideas in a state of excitement, and this is whole experience become associated with the imaginative ideas that we associate in that, I mean, vivid sensation and excitement to those incidents and situations and objects in nature. सो अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री के अंदर जो है वर्ड्सवर्थ कहता है, आई हैव सेड दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन recollected in tranquility. The emotion is contemplated till by a species of reaction the tranquility gradually disappears. तो वही चार स्टेजेस जो हैं they have been discussed in this slide. ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद मेमोरी है, उसके बाद फिल्टरिंग है, उसके बाद जो है वो कंपोजिशन है। सो an emotion kindred to that which was before the subject of contemplation is gradually produced and does itself actually exist in the mind. तो ये imaginative coloring की बात जो है वो उसके ऊपर बात करता है। In this mood, successful composition generally begins, and in a mood similar to this, it is carried on. But the emotion of whatever kind and in whatever degree from various causes is qualified by various players, so that in describing any passions whatsoever which are voluntarily described, the mind will upon the whole be in a state of enjoyment, vivid sensation, right? वो जो एक जो प्लेयर है, इमोशंस है, वो उसको जो है वो इंस्पायर करेगा।
सो जो 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 इंटायर प्रोसेस है, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। जैसे अभी मैंने 4 जो है उसकी स्टेजेस के ऊपर बात करें, तो आप उसको यूं भी जो है वो आई मीन समराइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट है, आप डेफोडिल को ले लें, आप सॉलिटरी रीपर को ले लें, आप कुकू को ले लें, या कोई और जो है वो लूसी ग्रे को ले लें। पोएट जो है वो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, सेंसरी एक्सपीरियंस है उसका, ठीक है। सेंसेस के साथ फिर उससे जो है वो इमोशन अराउज होते हैं, वो बिकम द पार्ट ऑफ मेमोरी। फिर उनको रिकलेक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ कंपोजिशन, रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी जो है। फिर उससे जो है वो इमोशंस जो है वो किंडर्ड इमोशन के अंदर ढल जाते हैं, आई मीन विद द इमेजिनेटिव कलरिंग। और उससे जो है वो पोएम जो है वो आप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फॉर द रीडिंग ऑफ द रीडर एंड टू अराउज द इमोशंस ऑफ रीडर। तो ये सारा जो है वो प्रोसेस आता है। लेट मी रिपीट इट अगेन। ऑब्जेक्ट है, पोएट है, उसका सेंसरी एक्सपीरियंस आई मीन ऑब्जर्वेशन, इमोशन साथ ही ज़ाहिर है एक्सपीरियंस करता है तो आपके इमोशन अराउज हो जाते हैं। सेकंड फेज जो है वो मेमोरी की है। तीसरा जो है वो रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, उसकी फिल्टरिंग होती है, किंडर्ड इमोशंस उसके अंदर है, और उसका जो रिजल्ट है दैट इज पोएम। ठीक है। फोर्थ वन जो है कंपोजिशन, दैट इज meant to arouse the emotions of the reader. So the poet has greater sensibility and the ability to penetrate to the heart of things. आम शख्स जो है उस तरह से चीज़ों को नहीं देखता जिस तरह से जो है वो आर्टिस्ट जो है, पोएट है, वो चीज़ों को देखता है, बिकॉज ही हैज़ मोर रिफाइंड, more sophisticated sensibility and the potential and talent and ability to penetrate, to look into the heart of the things. So the power of imagination enables him to communicate his knowledge. जिस तरह से वो एसोसिएट करता है मुख्तलिफ आइडियाज को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, तो दिस इज हाउ he communicates his knowledge. His imagination, power of imagination enables him to share his knowledge through that composition. The poet becomes a teacher who shows men how to understand their feelings and improve their moral being. So अपनी इसी जो है वो theory के through जो है he sets the or he determines the character of a poet, what should be his qualification. So he becomes a teacher जो हमें अपनी ही जो फीलिंग्स है, आई मीन रीडर्स को, और उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, और हमारी मॉरल बीइंग के अंदर जो है उसको डेवलप करने, उसको इम्प्रूव करने को, अपनी जो सेंस ऑफ मॉरलिटी है तो हेल्प करता है, हमें फैसिलिटेट करता है. सो पोएट इज अ टीचर, इज अ गाइड. द पोएट्स टास्क कंसिस्ट्स इन ड्राइंग अटेंशन टू द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ लाइफ. वो पोएट जो है वो आम सी चीज़ों को जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करता है, दिखाता है आपको, आपकी तवज्जो हासिल करता है उनकी तरफ. टू द हम्बलेस्ट पीपल, टू द हम्बलेस्ट पीपल वेयर द डीपेस्ट इमोशंस एंड ट्रूथ्स आर टू बी फाउंड. तो वो जो लोग हैं जिनको वो समझता है कि नेचर के करीब रहते हैं, वहाँ पर आर्टिफिशियलिटी नहीं होती, सिंसियरिटी होती है, वहाँ पे ओरिजिनलिटी होती है. तो उन लोगों के जो है वो अंदर वही जो 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 डीपेस्ट इमोशंस हैं और ट्रूथ्स हैं वो मिल सकते हैं हमें, बिकॉज दे लिव क्लोज टू, वेरी क्लोज टू नेचर. ठीक है. और उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो उनकी लैंग्वेज है, दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम देयर एसोसिएशन, देयर क्लोजनेस, कंटिग्यूटी विद नेचर. तो इसलिए जो है वो समझता है कि जो है वो वहाँ पर जो है वो हम इन लोगों के अंदर जो है इन इमोशंस और ट्रूथ्स को पा सकते हैं. There are a few of the characteristic features of this preface to lyrical ballads. I have already talked about these features. You can go through it, and if you find some difficulty, some question, you can ask me the same tomorrow in the next lecture, inshallah.